Hello, good evening, everybody. My name is Abhishek Thakur. I am a part of Royal Defence Academy, and today we are going to discuss an important current affairs event, that is the Bangladesh current crisis. You all know Bangladesh country is going through a major crisis. There are incidences of civil war in the country. बांग्लादेश में क्या हो रहा है? सिविल वॉर की कंडीशंस हैं. We are going to be discussing what are the factors behind this civil war in Bangladesh and how the government of Bangladesh is responding on behalf of civilians, and we will also be discussing its impact on the India. What actually happened in Bangladesh is that on June 5th, 2024, there was a High Court order that re-established the 30% job quota. बांग्लादेश में पहले फ्रीडम फाइटर्स जो थे युवा वाहिनी के, उनको और उनके डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स दिया जाता था. सर्टेन परसेंटेज ऑफ जॉब्स वर रिजर्व टू द डिसेंडेंट्स ऑफ युवा वाहिनी फ्रीडम फाइटर्स that fought in 1971 war in Bangladesh. With time, this reservation came to be cancelled by the government, but on 5th June of 2024, the High Court in Bangladesh again ordered the government to reestablish a 30% job quota. इसके बाद में क्या होता है? The general population वो अगेंस्ट में थी इस 30% जॉब कोटा के, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था. The general population demanded that there should be no reservation in the country and all the jobs in the government वो merit पर fill की जानी चाहिए. This is why starting from June itself and on continuing till July and August, there were several student protests, there were blockades, there was a condition of civil war. बांग्लादेश में civil war जैसी हालत हो चुकी थी उस समय पर. Student blockade by July 10, 2024 severely affected Dhaka's transportation system. As you all know, जहाँ पे हर कहीं पे protest होती है, वहाँ पर normal civilian life के अलावा transportation system is one of the most important thing that is affected. इसकी वजह से जो other factors of civilian life हैं, वो भी affect किए जाते हैं. Now, the ball was in the favor of government. अब क्या होता है? गवर्नमेंट का रिटेलिएशन होता है. द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश मेक अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट को नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार को दिया जाएगा. मीनिंग रजाकार वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड टू दोज पीपल हु वर फेवरिंग द पाकिस्तानी आर्मी एट द टाइम ऑफ 1971 इंडिपेंडेंस वॉर इन बांग्लादेश. सो रजाकार वर बेसिकली द ट्रेटर्स ऑफ बांग्लादेश स्टेट. Prime Minister Sheikh Hasina was in favor of this reservation to freedom fighter descendants. उनको and the general public was against the reservation. इसके बाद में there was a effective response from government. Tensions का escalation होता है, government repress करती है protest को, और जो civilians होते हैं वो protest अपना जारी रखते हैं. With this, the internet shutdown is one of the most important mechanism resort which the government uses to quell any protest. इंटरनेट का शटडाउन कर दिया जाता है बांग्लादेश में. इसके अलावा डिफरेंट जगह, बहुत अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट भी होते हैं इन बांग्लादेश में. We have already discussed कि ट्रांसपोर्टेशन का डिसरप्शन ऑलरेडी हो चुका है बांग्लादेश में इन जून, जुलाई एंड अगस्त. लार्ज स्केल पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अफेक्टेड. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ज्वाइन इन करते हैं बिकॉज दे वर डिमांडिंग मेरिट नॉट रिजर्वेशन इन बांग्लादेशी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर. However, there was a one critical point that again flamed the protest in Bangladesh. This was on July 18, 2024. Approximately 20 students killed in clashes with police. पुलिस के साथ झड़प होती है, 20 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं उसमें.
जब ये बात ऑर्डिनरी बांग्लादेशी सिविलियंस को पता लगती है तब प्रोटेस्ट एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर और ज़्यादा स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द पुलिस टू कंट्रोल दीज प्रोटेस्ट. On July 19, 2024, the Bangladeshi government comes on back foot. बांग्लादेश की सरकार नेगोशिएट करने लग जाती है प्रोटेस्टर्स के साथ में. We have already seen that since June 7, Bangladeshi government was on a retaliatory mode. बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो प्रोटेस्ट को क्वेल डाउन करना चाहती थी, बट जुलाई 19, 2024 में गवर्नमेंट began negotiating after it realizes that these protests have taken a large scale. They have become almost a national movement and they cannot be quenched down. गवर्नमेंट पे अपोजिशन एंड स्टूडेंट्स के द्वारा ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि गवर्नमेंट ने कोवर्जन यूज किया है, फोर्स यूज किया है एंड देयर वर डिसअपीयरेंसेस ऑफ की कोऑर्डिनेटर्स. जो प्रोटेस्ट के इंपॉर्टेंट पीपल थे जो इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द अपोजिशन पार्टी मेंबर्स एज वेल एज द स्टूडेंट लीडर्स, दोज वर इन्वॉल्व इन द प्रोटेस्ट, उनको डिसअपीयर कर दिया जाता है. गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेती है बांग्लादेश में. After that, Supreme Court again intervened. Remember that जो order आया था 30% reservation का, that was given by one of the High Court in Bangladesh. The Supreme Court steps in and Supreme Court orders to scale down the reservation quota from 30% to 7%. Supreme Court कहता है कि reservation सिर्फ 7% होना चाहिए for the descendants of freedom fighter in government jobs. Still, Supreme Court intervention fails to quell the protest. प्रोटेस्ट फिर भी बंद नहीं होती हैं. इसके बाद 29 जुलाई 2024 को लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन रिज्यूम आफ्टर गवर्नमेंट इग्नोर्स द अल्टीमेटम. स्टूडेंट लीडर्स अल्टीमेटम दे रहे होते हैं बहुत सारे कि हम पूरे नेशन वाइड हड़ताल करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे. स्टिल गवर्नमेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड टू नेगोशिएट, बट आफ्टर दैट ऑन जुलाई 2029 इट वाज क्लियर दैट गवर्नमेंट वाज इन नो मूड टू नेगोशिएट. गवर्नमेंट अगेन फोर्सफुली प्रोटेस्ट को क्वेल डाउन करना चाहती है. These protests became heavily intensified. In the first week of August, जो अगस्त का पहला सप्ताह होता है, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो होता है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है. 2 अगस्त को अगेन प्रोटेस्ट होती हैं बहुत लार्ज स्केल पर. अगस्त 3 तक स्टूडेंट फाइनली मेक्स अ डिमांड. दे डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर. वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहते हैं. ऑन अगस्त 4, 2024 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिंस. This marks the shift to anti-government protest. अब जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं. अर्लियर पहले क्या हो रहा था, पहले जो प्रोटेस्ट थी वो सिर्फ रिजर्वेशन के खिलाफ थी, बट अब जो प्रोटेस्ट होती है दैट बिकम्स एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट. दिस मार्क्स द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश. In the first week of August, there was a large-scale violence. There were clashes between protesters and security forces. Death toll was increasing constantly. At one place, nearly 100 people were killed in a single day. एक ही दिन में 100 लोग मर जाते हैं. अब just think about the repercussion that it will have if this news reaches to all the parts of Bangladesh through social media. This is one of the deadliest protests in the nation's history since its independence. 1971 के बाद में ये जो 100 लोग एक दिन में मरे हैं इन अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, ये पहले बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ था. On 5th August 2024, hundreds and thousands of protesters began marching to Dhaka and surrounding towns. Since these protests were anti-government protests and government was functioning from Dhaka, the capital of Bangladesh, it was imperative for the protesters to surround the capital city. Capital city को surround कर लिया जाता है and it became very much impossible for the government to function effectively.
गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर पाती है अपना, क्योंकि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बांग्लादेश की ढाका की सड़कों को घेर लेते हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सिविल अनरेस्ट इन बांग्लादेश एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लॉ एनफोर्सर रियलाइज दैट सिचुएशन इज बियॉन्ड कंट्रोल. जब इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाएंगे तो पुलिस को और अदर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी लगेगा कि इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. एंड व्हाट हैपेंस इज पुलिस, वेरियस पुलिसमैन becomes absent from their duty. पुलिसमैन अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं. The Bangladesh effectively becomes a state without police force. वहां पर कोई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहती है जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को मेंटेन कर सके. एंड दिस इज हाउ बांग्लादेश गोज इनटू एनार्की, a state of anarchy. Military's crucial decision. What happens after it? We know that by 5th of August, these protests have reached their peak. It was impossible for the government, the Sheikh Hasina government, to retaliate. So the final measure that was needed was बांग्लादेश में शेख हसीना को या तो रिजाइन करना पड़ेगा या फिर इस प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा. बट वी ऑल नो दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी टू नेगोशिएट बिकॉज दीज प्रोटेस्ट हैव ऑलरेडी बिकम एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट. Now comes the military's role. Seeing the opportunity, the Army General, Army Chief of Bangladesh Military goes to meet Sheikh Hasina. वो Prime Minister Sheikh Hasina से मिलने के लिए जाते हैं and he gives two options: either leave the country or ready to face the consequences. Because Army is the last resort to maintain law and order and to protect the country. Army Chief used this condition, the situation in this country very efficiently, and he effectively gains control and oust the Sheikh Hasina government. Sheikh Hasina जो गवर्नमेंट होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है and Sheikh Hasina was forced to leave his country. Sheikh Hasina ultimately इंडिया में आती हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन की मांग करती हैं फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट. Meanwhile, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? There is no law and order in Bangladesh on 5th of August and 1 week after it. Subsequently, बांग्लादेश में गवर्नमेंट तो है ही नहीं, सिविल वॉर की कंडीशन ऑलरेडी है. द मिलिट्री टेक्स कंट्रोल एंड आर्मी चीफ जो होते हैं ही फॉर्म्स अ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अनाउंसेस दैट वंस पीस एंड स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड इन बांग्लादेश देन देयर विल बी इलेक्शन. बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि जब तक पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जैसे ही पीस एंड स्टेबिलिटी आती है हम इलेक्शन करवा देंगे. Hasina's exit we have already discussed कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर is forced to go into India and seek protection there. अभी भी आज के टाइम पे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर at an undisclosed location is in India. Composition of the movement. Now let's talk about what were the various participants in the Bangladeshi movement, the present Bangladeshi movement. We all know that this Bangladeshi reservation quota system, the High Court order of 30% reservation, that was going to impact the students in Bangladesh that were preparing for government jobs. So ultimately, students was the main body that were responsible for these protests. This formed the backbone of the movement. After that, parents, teachers, lawyers, activists, artists, and professionals also joined, particularly because they were fed up of Sheikh Hasina government. We will be discussing in next slides also that how the Sheikh Hasina government was responsible for an authoritarian type of regime despite being a democracy. After that, international attention was also involved in this crisis. Major foreign powers were also involved indirectly. For example, United States of America. It is alleged that it was the United States of America that did this protest, that was responsible for this movement in Bangladesh. UNICEF was also involved and it expressed its concern over child death and crackdown. Underlying issues. Now, people were already distressed from the Sheikh Hasina government's regime. जो शेख हसीना गवर्नमेंट का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था वो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन था. बांग्लादेश, despite being a democracy,
had only one person that was in power, that was Sheikh Hasina. There were concerns about lack of participative democracy. जो मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी. देयर वाज ओनली वन पर्सन दैट वाज इन द गवर्नमेंट, दैट वाज शेख हसीना. देयर वाज वाइड स्केल करप्शन इन्वॉल्व्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. करप्शन बहुत होता था यहाँ पे. एंड देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्टोरल इंटेग्रिटी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सिंस लास्ट 3 इलेक्शंस, फॉर एग्जांपल इन 2018, 2024 एंड 2014 इलेक्शन, all the 3 elections in a democratic country like Bangladesh, opposition have boycotted this election. कोई भी अपोजिशन पार्टी ने इन तीनों इलेक्शंस में बांग्लादेश में इलेक्शन नहीं लड़ा है. So it was imperative that Awami League, this was the party of Sheikh Hasina, it was imperative that this party will be winning the election, and this is how Sheikh Hasina came to become the prime minister for a very long time in Bangladesh history. अपोजिशन की पार्टीज ने पार्टी नहीं दिया था इलेक्शन में. After Math of Hasina's departure on 5th of August, we already know that Sheikh Hasina came to India and seek protection here. What happens after it? There was an absence of law and order, anarchy. There is anarchy in Bangladesh everywhere. There is no state, absence of state. In Bangladesh, statues and murals of Sheikh Mujibur Rahman were desecrated. Sheikh Mujibur Rahman is the father of Sheikh Hasina. He is also known as Bangabandhu, father of Bangladesh, because he was the person that was responsible for liberation of Bangladesh in 1971. Just imagine one of your freedom fighter, one of the topmost people that was responsible to liberate you from Pakistan, from an atrocious country. The murals and statues of that particular person are being desecrated. So the condition was very bad in Bangladesh at that time. There was a loss and damage to public property during unrest. We all have seen the visuals whereby Bangladeshi protesters पार्लियामेंट पर अटैक कर रहे थे, एंड ऑल्सो द रेजिडेंस ऑफ शेख हसीना, द प्राइम मिनिस्टर, उनके रेजिडेंस पर भी हमला किया था उन्होंने. वहां के इनसाइड विजुअल्स भी हमने देखे थे न्यूज में. Now coming to opposition's role in this Bangladeshi crisis. Bangladeshi Nationalist Party accused the government of Bangladesh, Awami League government, accused it of exploiting student movement. बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी थी BNP, उसने आरोप लगाया कि जो अवामी लीग है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है. जमात-ए-इस्लामी is one of the opposition party. By the way, something more about this party. This is the right-wing party that helped Pakistan in 1971 war. This party did not want Bangladesh to be separated from Pakistan. This is the very same party. This also alleges that the current Awami League party, Awami League government was exploiting the students and using forceful mechanisms to quell the protest movement. Awami League blamed the opposition parties for the intensification of these riots and protests. Coming to India's response, हम जानते हैं कि इंडिया इज द नेबर ऑफ बांग्लादेश. इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर. So it is very much imperative that whatever is happening in Bangladesh is going to affect India. For example, Bangladesh में अगर unrest होता है, so there is going to be large scale migration. We already know that in 1970 and 1971, when there was a Bangladeshi crisis, almost 1 crore illegal immigrants entered in the northeastern region of India, and this changed the demography of northeastern region. This is the problem we are suffering from today also.
We do not want to repeat what happened in 1970s and 71 in today's era. So it is imperative for India to respond effectively. Foreign Minister Jaishankar response omitted mention of human rights violation. India is seen to be keeping a close eye on Bangladeshi situation. India is keeping a vigilance. इंडिया अभी ऑब्जर्व कर रहा है कि हाउ द क्राइसिस इन बांग्लादेश अनफोल्ड बिफोर मेकिंग एनी रेस्पॉन्स. बांग्लादेश के क्राइसिस पर इंडिया ने कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्रिटिसिज्म नहीं किया है, बिकॉज अवामी लीग गवर्नमेंट वाज कंसीडर्ड अ फेवरेबल गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया, बट द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय खलीदा जिया BNP इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट एंटी इंडिया. इट इज एन एंटी इंडिया पार्टी. India's approach criticized for failing to recognize genuine public discontent, and because कोई भी effective statement नहीं आया है, response नहीं आया है बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट पर, so इंडिया के इस स्टैंड पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है. Bangladeshis view India's relations as aligned with one party, not people. अब बांग्लादेश में परसेप्शन ये जा रहा है कि जो इंडिया के रिलेशन है वो अवामी लीग पार्टी के साथ थे, बांग्लादेशी लोगों के साथ नहीं थे. सो दिस इज अ वेरी फॉल्स परसेप्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, एंड इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, एंड दे आर वर्किंग ऑन दिस रिगार्ड ऑल्सो. इंडियन मीडिया's role, we have already seen there is a lot of fake news that is being spread through Twitter, social media sites like Facebook and Instagram also. For example, as one article in Hindu says, that large scale reporting of violence against Hindu communities is not true, but some of the left-wing organizations consider this news as fake news, but the right-wing organizations consider this news as a truth. We already know that the Hindus are in minority, and there have been various instances whereby there have been discrimination on the Hindu community in Bangladesh. So it is very difficult to confirm or deny this news, but various reports claim that this is in fact a truth. Very true news, not a fake news. Bangladeshi reaction regarding the atrocities committed on Hindu community. We know that Muhammad Yunus, a Nobel laureate, is the person that have been given the charge to run the country and run the government in Bangladesh, interim government. He is basically an advisor to the interim government in Bangladesh. He has already confirmed that there have been violence against Hindu community. Hindu community के against में violence हो रहा है. He has accepted this fact, and he has also assured the government of India via phone call with Prime Minister Modi that Hindu community के protection के लिए जो भी measures लिए जाएंगे जरूरी होंगे वो लिए जाएंगे. And what are the steps that will be done for the protection of Hindu minorities? The first is public vigil. There will be students, activists and opposition parties that will have to take care of the protection of Hindus. The government, interim government will also have to do its bit to protect Hindus. State की जो मशीनरी है उसको लगाया जाएगा so that the protection of Hindus can be ensured. The next is community outreach. जो हिंदू लीडर्स हैं हिंदू कम्युनिटी में उनसे मिला जाएगा. मोहम्मद यूनिस ने उनसे बात भी करी है, बहुत सारे जो लीडर्स हैं हिंदू कम्युनिटी के उनसे, और उनको अश्योर किया गया है कि दे विल बी सेफ इन द कंट्री, एंड दिस इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो वांट, द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश. नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट. Professor Yunus, Muhammad Yunus, is a Nobel laureate. He is the person who is responsible for the Grameen Bank concept.
He basically has a sound knowledge in economics and finance. So it is very much unclear if he will be able to administer the country effectively. क्या वो अच्छे से सरकार चला पाएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे challenges हैं present time में. The second challenge is election integrity. The army chief also announced that election will be there once peace and law and order is restored in the country. जब इलेक्शन होंगे क्या वो इलेक्शन फ्री फेयर एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन होंगे? Unlike those that have been happening since 2014 and 2018 and 2024, जहां पर opposition was not allowed, opposition rejected the election altogether. There is also a problem of reconciliation. There is a large scale division between various political parties as well as various sections of Bangladeshi society. So reconciliating them will be a very much harder task. बहुत ज़्यादा problem होगी इसमें. Moreover, you all know that Bangladesh is also facing an economic crisis. Whenever there is a law and order problem, it is the economy that suffers the most. So the people, the poor people particularly, are going to be affected a lot. Now, what are the implications for Bangladesh from this? The governance structure is going to be affected, we all know, but we hope that there are possible reforms in sight for the government. ये जो अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, इसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इलेक्शन होंगे, उससे पॉसिबल रिफॉर्म्स आर ऑन देयर वे. दिस इज द एक्सपेक्टेशन अमंग बांग्लादेशी सिटीजन्स. देयर इज अ पोटेंशियल शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स एंड पार्टी इन्फ्लुएंस. जो आवामी लीग वाज इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ वी सी देयर इज अ शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स एंड पार्टी इन्फ्लुएंसेस. There will be different person who will be contesting for the party and power in Bangladesh. So the power dynamics will be changing. Social dynamics will also change. We have already seen that youth का participation बहुत ज़्यादा है इस movement में. Youth आने वाले जितने भी movement होंगे बांग्लादेश में उसमें भी active होंगे काफ़ी. And there will be a demand for accountability also by the youth as well as the citizenry at large. Now coming to the lessons for India from this Bangladesh crisis. The first is we have to engage with all the sections involved in Bangladesh. For example, traditionally we have ignored Bangladesh Nationalist Party, which is in opposition. We have ignored Jamaat-e-Islami, and because we have ignored these important factions in Bangladeshi politics, these have become strictly anti-India. In Bangladesh, it is seen as Awami League is favoring India and other two parties are anti-India. So we have to change this perception and we have to engage broadly. The next is embracing truth. The government of India also realizes that Bangladesh में अब इंडिया की फ्रेंडली सरकार जो पहले थी अब नहीं रही. India has to accept this truth and we have to adjust accordingly so that our long-term benefit can be maintained upon. We have to maintain good relation with Professor Mohammad Yunus, who is the advisor to the interim government as well as other factions of Bangladesh. We also have to win the hearts and minds of Bangladeshi local citizen also, because it is ultimately the people that decide the government and foreign policy of a country. So it is very much important for India to engage. We can engage through our soft power as well as government to people interaction. So this will be all for today's lecture. Thank you very much.